Another bounce, edge and gone. You felt it was coming. Arslan Ash has announced his arrival. Wicket in the first over, all to do with extra bounce. He got his revenge. Herrera never covered the line, stayed leg side-ish, and with a slip in there and the keeper, it's a very risky shot to play. Just a tickle, that's all he wanted. And he's got his first man. Trying to repeat that shot, but it wasn't there with the sort of field they had. Gone on 8, Northern 1 down on 9. Herrera wouldn't want to see this replay. Look at his feet. He was nowhere in position. Looking at the length, probably he was looking to play the ramp, which he does quite often, but on that occasion the ball kept in the air. And an easy one for Haris. It was just a matter of time. Nasir Nawaz didn't look very comfortable. I think the umpire wants to check the no ball, but this is nothing less than what Arslan Ash deserved. Yeah, it was just around the corner. It was a matter of few deliveries. That bounce was always testing them. Just to be sure, umpires are having a look at that. Seems fine, no worries. And the bounce has undone Nasir Nawaz. He wasn't comfortable at all. Gone for 2, Northern 21 for 2. बड़ा इंटरेस्टिंग होता अगर हम इनको रावलपिंडी पिचेस पे देखते रहे. देखिए एक बार फिर एक्स्ट्रा बाउंस और नासिर नवाज अगले पांव पे ही खेलने चले गए. और जब आप एक बॉलर को ऐसा बाउंस मिल रहा हो तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि इस तरह का शॉट खेला जाए. फ्री हिट है, ये आउट शुमार नहीं होगा. रन जरूर बन जाएगा. और क्या ये क्रीज के पीछे थे. खालिद उस्मान ने बड़ी चालाकी से थ्रो कर दी. टहलते हुए आ रहे थे रोहेल नजीर, तो आया ये रन आउट हो गए हैं. क्योंकि जिस तरह का रद्द अमल देखने को मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के फील्डर्स खास से खुश हैं. उन्होंने यहाँ पर खुशियां मनानी शुरू भी कर दी. यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है कप्तान खालिद उस्मान ने. और अगर ये इस तरह से विकेट हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी रोहेल नजीर के लिए. शायद टहल रहे थे, कुछ क्या सोच रहे थे. ओह, शायद ही आउट हो जाएंगे. ये शायद नहीं, यकीनन आउट हो जाएंगे अली, क्योंकि वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो है इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आसान लिया, सहल पसंदी का शिकार हुए. ये बहुत बेसिक बात है तारिक भाई, ये एक स्कूल बॉय एरर है कि जो चीज़ें सबसे पहले आपको बचपन में सिखाई जाती हैं कि आपको बल्ला ड्रैग करना है, और रोहेल नजीर जितनी क्रिकेट खेल चुके हैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप इतने कैजुअल लेंगे अपने विकेट को जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है. जहाँ सही डिसीजन, आउट का डिसीजन दिया गया. यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी रोहेल नजीर को, क्योंकि ये अच्छा तरीका नहीं आउट होने का. He is gone, yeah. Imran wasn't sure if the umpire's given it out. He double checked, straight away put the finger up. Short ball, not going very well with the northern batters. You've seen Imran use the short pitch delivery to good effect in Rawalpindi. This time, once again, pushing Mubassir back. Steep bounce. Got the glove, I think, and Imran had to turn around and make sure that the decision has been made by the umpire. Mubassir, who looked good. His bark was better than his bite. 22, 86 for 4. उठाने में कामयाब हुए और सीधा हाथों में खेल दिया. और आतिफ खान, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो बड़े शॉट खेलेंगे, उन्होंने अटेम्प्ट भी किया और रिवर्स स्वीप करते हुए वो एक आसान सकाई दे बैठे थर्ड मैन को. बाउंस ज्यादा कर गया था गेंद, जिसकी वजह से सही मिडल नहीं कर पाए. टॉप एज हुआ और सीधा फील्डर के हाथों में. बड़ी शॉट्स खेलना चाह रहे थे और ये इरादा भी ठीक था कि स्पिनर्स के पीछे जाएं, लेकिन एक्सिक्यूशन अच्छी नहीं कर पाए. और इनका पहला मैच डिसअपॉइंटेड रहा. 2 रन बना के वापस 94 पे 5 नॉर्दर्न. अब आराम देने का फैसला किया है और ये पहली गेंद पर उठाकर खेले. फील्डर तैयार हो रहे हैं. सूरज की चमक से बचने की कोशिश की और उसके बाद ले लिया कैच. ये मुश्किल कैच था क्योंकि सूरज की रोशनी आंखों में आ रही थी कामरान गुलाम के. कुछ देर के लिए उन्होंने इसका एहसास भी दिलाया
लेकिन ये मौका जाया नहीं किया. विकेट मिल गई इमरान को. आहिस्ता गेंद आई ऑफ द विकेट. अक्सर ये इस तरह की लेंथ को बाउंड्री के पार पहुंचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन ये स्क्वायर बहुत बड़ा है. थोड़ा सा डिप कर गया था. पूरी शॉट खेली भी नहीं, फॉलो थ्रू नजर नहीं आया सोहेल तनवीर के. और इनसे उम्मीदें आज बहुत थी, लेकिन सिर्फ 4 रन बनाने में कामयाब हुए. नॉर्दर्न 6 विकेटों के नुकसान पे 102. Just knocked him over. That is brilliant. He's trying to do different things. Why would you do that to somebody like Ehsanullah, who's bowling brilliantly? That is a wonderful wicket. Ehsanullah, his third one. Have a look at that. Just that is not a right choice of shot. He deserved it. Definitely deserved it. A good inning, ending in a bad way. 52 of 40, 113 for 7. Oh, come on. That was really not necessary. In 2 minds, should I do that paddle sweep or ramp it? But I'm actually just missing that. He's usually on target. And that's how he bowls the last over. No. The ball never arrived. Yeah, back of the hand. Too good for Mehran Mumtaz. Scored only 12 runs, 144 for 8 now. That's out. Straight to cover. Shinwari has to walk back. Amir Jamal is trying to get to a strike. 9 down now with that. Yeah, that is brainless cricket. Why would you do that? You've got a set batter, one of the better hitters of the side, of the tournament even. Just trying to be a hero. It's not the right situation. Just take a single, give the strike to Amir. It should be simple. Gone without scoring. 144 for 9. Shinwari wanted to go big, wanted to go over. Not happening. Maybe expecting a slower one, because we know that Imran Junior rather, he uses that back of the hand deliveries very sensibly. Big shot, but won't go any distance. But they can come back for 2. 4 fielders, including the bowler, and they're coming back for 3. Yeah, that's not possible. 2 is okay. So eventually, at the end of 20 overs, 152 is what Northern have managed in the 20 overs. Another back of the hand delivery to finish off things. It went miles in the air and everybody was running towards the ball. I don't know what Haris was doing. Maybe he thought he could get to that ball. Sabzada Farhan making no mistake.